Hi, my name is Dr. Siddhant Bhargava and I am the co-founder of Darzee. Today, we're going to be doing something very special and so common. Let's talk about carbohydrates. Now, good carbs versus bad carbs. Now, before I tell you what good carbs and bad carbs are, I need you to do three things. Number one, subscribe to this channel right here. You know we come up with videos every Tuesday and every Friday. Food Darzee is all about the information, the food, the recipes, the knowledge, and that's what we provide to you every single week. Subscribe to the channel, like this video, and at the end of it, if it truly adds value to your life, make sure that you share it with all of your friends and families. Coming back, good carbs versus bad carbs. Now, firstly, I don't like to demonize food, like bura acha kuch hota nahi, of course in reality hota hai, but why do you want to put the psychological stress in your head that makes you differentiate between good carbs and bad carbs? So simply put, let's put them as useful carbs and useless carbs. Okay? Useful carbs and useless carbs. Now, when we talk about useless carbohydrates, they basically have no value, they add no value in your life, but these useless carbohydrates can mean things like potato chips, can mean things like banana chips, they could be chocolates, they could be toffee, they could be candy. Anything that goes inside your body is not giving you micronutrients, is not giving you vitamins, minerals, fiber, it's only giving you empty calories, a little bit of short burst of energy. Those are useless carbohydrates, those are junk carbohydrates, and those are bad carbohydrates. इट्स वेरी इंट्यूटिव कि हमें कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना चाहिए, कौन से हमारे बॉडी के लिए काफ़ी बेकार होते हैं. बेसिकली मोस्ट चीज़ जो आप जंक फूड के हिसाब से कंपेयर करोगे वो बेकार है आपके लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ड्रिंकिंग energy drinks, say Pepsi, Coca-Cola, Thumbs Up, Fanta, Sprite, all of these are absolutely useless carbs. They're not doing anything for you except for giving you all of those empty calories, giving you that much sugar. That's a useless carbohydrate. What is a useful carbohydrate that you genuinely need in your diet? Whether it's giving you fiber, if it's giving you energy, if it's giving you vitamins, if it's giving you minerals, if it's giving you satiety, which means if it's helping you fill your stomach up, helps you feel less hungry, helps you portion control, all of those are useful carbohydrates. Now we can further subdivide these carbohydrates. So when we talk about useless carbohydrates, things like say chocolates, and basically all of your junk food can be categorized in your useless carbohydrates, but under your useful carbohydrates, again categorize it into three. One would be your simple carbohydrates, two would be your complex carbohydrates, and three would be your fiber. इसका क्या मतलब होता है? कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह ट्रीट किए जाते हैं, विच मीन्स दैट योर बॉडी नीड्स दिस कार्बोहाइड्रेट्स ऑन एन एवरीडे बेसिस टू सॉर्ट ऑफ फ्यूल योर रनिंग, योर वॉकिंग, योर टॉकिंग, ऑल ऑफ दैट. ऑफकोर्स देयर आर मैकेनिज्म्स इन विच आप कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंस हटा के आपकी बॉडी को ये बोल सकते हो कि ठीक है मुझे फैट पे जीना है, बट कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म योर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दैट्स हाउ वी बीन लिविंग. नाउ व्हाट मेक्स अ कार्बोहाइड्रेट सिंपल, कॉम्प्लेक्स और फाइबर? सिंपल सी बात है. A simple carbohydrate, once it goes inside your body, once it starts digesting, it is quickly digested and it is quickly absorbed into your bloodstream, raising your blood glucose or your blood sugar levels quickly. That's a simple carbohydrate. A complex carbohydrate is when it takes a little longer to digest, it enters your bloodstream in a very slow fashion, and because of that it does not raise your blood sugar levels instantly. The third kind of a carbohydrate is fiber. Very simple, passes through your body untouched. Its main role is to give your stools or your potty, as we call it, volume, bulk, and for the easy passage of your stools. Of course, fiber is also responsible because the gut bacteria are sort of going to ferment it, and it's responsible for, it sort of has a prebiotic effect as well, but these are mainly the three kinds of carbohydrates. Now, हमें कैसे पता दैट बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हमें कौन सी चूज करनी है? लेट मी टीच इट टू यू. ये बात तो सबको क्लियर हो चुकी है दैट बिटवीन यूजफुल एंड यूजलेस फर्क क्या है. यूजलेस कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो आपको आपकी भूख भी खत्म नहीं करते, आपको न्यूट्रिशन भी नहीं देते, उसमें बहुत सारी कैलोरीज भी होती हैं एंड वो बेसिकली यूजलेस होते हैं.
यूजफुल कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, बट आपको कौन सा कार्बोहाइड्रेट कब खाना है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट कब नहीं खाना है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फटाफट डाइजेस्ट होते हैं, फटाफट अब्जॉर्ब होते हैं, फटाफट ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज करते हैं, फटाफट इंसुलिन स्पाइक कॉज करते हैं एंड फटाफट आपके सेल्स में पहुंच जाते हैं फॉर यूटिलाइजेशन। So when do you need simple carbohydrates? When you need a quick burst of energy. Make sense? You want a quick burst of energy? You consume a simple carbohydrate. कब आपको क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी चाहिए? 1 मे बी अगर आपको एक 15 मिनट का एग्जाम देना है, 2 मे बी अगर आपको रनिंग के लिए जाना है, 3 मे बी इफ यू वांट टू गो टू अ जिम. बेसिकली whenever you need your energy levels to go up in the next 10 to 12 minutes, that's when you consume a simple carbohydrate. So pre-workout, post-workout, these are the 2 times when consuming a simple carbohydrate makes sense. At any other given part of the day, in my opinion, consuming a simple carbohydrate does not make sense. Of course, there are exceptions. चक्कर आ रहा है, you can always have a simple carbohydrate. For example, जब चक्कर आता है हम क्या करते हैं? या तो रसना पीते हैं या नींबू पानी में ढेर सारी चीनी डाल के पीते हैं. What is all this? All of this are simple carbohydrates which are meant to enter your bloodstream quickly and give you that short burst of energy. ठीक है? Now, what are the kinds of simple carbohydrates? All of your fruits are simple carbohydrates. All of your fruit juices, which I hate, are simple carbohydrates. Milk is a simple carbohydrate. ठीक है? So, your Tang, your Glucon-D, all of your anything which has sugar basically is a simple carbohydrate. So, sugar forms the primary component of your simple carbohydrates, is why I always tell you that simple carbohydrate खाना है तो before workout या after workout खाओ, बीच में खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, because I don't find it necessary to consume a simple carbohydrate जब मैं अपने पूरी बॉडी की एनर्जी लेवल्स को अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मेंटेन कर पाऊंगा. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. नाउ मैं लेट्स मूव टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सो व्हाट आर योर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स? ब्रेड, राइस, रोटी, व्हीट, बाजरा, रागी, नाचनी, दलिया, ओट्स, उपमा, इडली, डोसा. All of these things are complex carbohydrates. मतलब, when you eat them, they take slightly longer to digest, they enter your bloodstream slightly slowly, and they give you a sustained amount of energy. So if I was you, I would create all of my energy from complex carbohydrates, and सिर्फ अगर dip in energy लगे या अगर मुझे excess energy की ज़रूरत पड़े, तब मैं simple carbohydrates अपनी body में introduce करूँगा. Otherwise, I will not. Got it? Now, what are other difference between simple and complex carbohydrates? Simple carbohydrates don't give you that amount of satiety. Satiety यानी पेट भरने वाली फीलिंग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देते. मतलब आप एक बारी में बहुत सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खा जाओगे, उसकी सारी कैलोरीज मिल जाएंगी, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा. Complex carbohydrates on the other hand fill you up much larger, which is why they're a superb food substance to consume. Got it? Now let's talk about fiber. Fiber सबको पता है क्या होता है. अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है फाइबर खा लो, सब यही बोलते रहते हैं, ईट मोर फाइबर, ईट मोर फाइबर. व्हाई डू यू वांट टू ईट मोर फाइबर? वेरी सिंपल. नंबर 1, इट गिव्स यू सैटिस्फैक्टी. जितनी पत्तियां खाओगे, जितनी सब्जियां खाओगे, उतना आपका पेट भरता है. ईटिंग द फ्रूट विद द स्किन gives you fiber. All of these things give you fiber, which is good for you. Number 2, it's going to make sure that आपके stools अच्छे से फॉर्म हो, अच्छे से पास हो, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो. Number 3, आपके गट बैक्टीरिया के लिए भी एक पदार्थ होता है for them to grow and create a healthy gut environment. Number 4, fibrous components also contain something which counteracts cholesterol. So जैसे mammals और जैसे vertebrates और जैसे जानवरों में कोलेस्ट्रॉल बनता है, there is something like a plant cholesterol which is contained in the fiber. So basically it is preventing the uptake of cholesterol into your bloodstream as well. So fiber के बहुत सारे benefits हैं. And if I was you again, my diet would always be rich in fiber, my diet would always be rich in complex carbohydrates, and my diet would be reasonably low in simple carbohydrates, because मैं दूध नहीं पीऊंगा बिकॉज दूध इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, लेकिन मैं दही, पनीर और चीज़ खा लूंगा बिकॉज ऑल ऑफ दीज में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफ़ी कम हो जाता है. सो बेसिकली आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड यूजलेस कार्बोहाइड्रेट्स, बट आई एम एब्सोल्युटली प्रो द रियल गुड कार्बोहाइड्रेट्स विच आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड फाइबर. So, I know this video was slightly long, but I wanted to explain this to you एकदम धीरे धीरे से, एकदम point wise, ताकि आपको कभी भी confusion ना हो कि क्या complex है, क्या simple है, क्या useless है. Got it? Of course, you are mature enough to make your own decisions. I am not telling you that जिंदगी भर useless carbs मत खाओ. Of course, कभी कभी enjoyment के लिए तुम कर लेते हो, but you always have substitutes for them as well. अगर आपको Pepsi पीनी है तो diet Pepsi पी लो.
कार्ब कंटेंट तो एटलीस्ट जीरो हो गया वहाँ पे. सो यूजलेस कार्ब्स को कम रखो, सिंपल कार्ब्स को भी कम रखो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को बड़ा रखो, एंड यू विल ऑलवेज लीड अ हैप्पी and an absolutely full life. This was me, Dr. Siddhant Bhargava, signing off. I hope you enjoyed the video. I know this video has added value to your lives. Like the video abhi karo, mere saath karo. 1, 2, 3. Click that like button. Share it with your friends and family. Subscribe to the Food Darzee channel. Turn on your bell notifications, and I will see you next Tuesday.